So we will start from the fourth step of problem solving, that is defining candid solutions. Basically, what is the meaning of candid? It means that something informal, unplanned, जो चीज आपने प्लान ना की हुई हो, randomly कुछ भी आप टास्क परफॉर्म कर दो, उसको हम candid कहते हैं. The word candid refers to something spontaneous and unplanned. For example, if you are asked to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school. Your answer in this way is the candid solution. Now they have given the example of a candid solution, that first of all you have to learn what actually the meaning of candid is. So candid means something spontaneous, कुछ अचानक से हो जाए या कुछ अनप्लान हो, जो कि आपने प्लान नहीं किया, आप रैंडम कोई डिसीजन आपने लिया है. तो इस तरह से अगर कोई चीज आप लो, कोई डिसीजन लो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन आप अगर सोच लो, तो दैट वुड बी अ कैंडिड सोल्यूशन. They have given a small example over here, that they are saying that if you wants to find out the number of students who can play cricket in your school, पूरे स्कूल में आपने ये देखना है कि कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं. तो यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में से देखेंगे कि जितने बच्चे आपकी क्लास में से कितने बच्चे खेल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में से 5 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज बना लेंगे कि 5 स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, तो मतलब हर क्लास में से तकरीबन 5-5 तो खेलेंगे ही ना, कम ज्यादा हो सकते हैं, 5-5 तो खेलेंगे ही. तो जो आपका आप क्या करोगे, उसे टोटल जितने भी आपकी फॉर एग्जांपल 10 आपकी स्कूल में क्लासेस हैं, तो 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो गए, 50. तो जो 50 होगा दैट वुड बी अ कैंडिड सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले क्रिकेट. ठीक है. To find exact number of cricket players, you have to opt some other way, like visiting each class or getting data from teachers. One can think of a candid solution anytime. वो कहते हैं कि अगर आपने एग्जैक्ट नंबर की तरफ जाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने एग्जैक्ट देखने हैं कि कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, देन यू नीड्स टू ऑप्ट एन अदर सोल्यूशन. अब ये तो फर्स्ट सोल्यूशन दैट यू हैव ऑप्टेड वाज योर रैंडम सोल्यूशन. आपने कुछ भी सोच लिया था कि हाँ जी मेरी क्लास में 5 बच्चे खेल सकते हैं, तो बाकी सब में भी 5 ही खेल सकते होंगे. तो आप क्या करोगे, अगर आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो फिर यू मे विजिट ऑल द क्लासेस. आप यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी क्लास, और यू मे गेट द डाटा फ्रॉम द टीचर्स. कि आपने हो सकता है स्पोर्ट्स की टीचर से आपने डाटा ले लेना है कि हर क्लास में कितने बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं. ठीक है. तो दैट वुड सेव योर टाइम एंड इट वुड बी वेरी एफिशिएंट. योर आंसर वुड बी एफिशिएंट. Okay, a candid solution can help to save time. In figure 1.4, there are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across the wall or by going sideways. And the one you think can work is the candid solution. It is not necessary that the candid solution is the actual solution of a problem. अब वो कहते हैं they have given a diagram over here of figure. Let's see the figure 1.4, multiple solutions of a problem. दे आर सेइंग दैट इफ यू वांट टू क्रॉस दिस वॉल, अगर आपने इस वॉल को क्रॉस करना है, या आपने इसके कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है जो कि आपने सॉल्व करनी है, जो कि वॉल के इस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो, वॉल के पार जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, तो व्हाट यू बेसिकली नीड, यू हैव टू डिफाइन अ कैंडिड सोल्यूशन. आपने कोई कैंडिड सोल्यूशन सोच लेना है कि मैं कहाँ से जाऊंगा तो मेरा आंसर आ सकता है. तो उसने कहा कि जी वॉल के ऊपर से अगर मैं जाता हूँ, वॉल को क्रॉस करके जाता हूँ, तो जो मेरा सोल्यूशन है, मैं मिनिमम टाइम में अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाऊंगा. तो ये उसने एक कैंडिड सोल्यूशन, एक तुक्का लगाया, उसने एक इनफॉर्मल वे में उसने बता दिया कि हाँ जी मैं इधर से जाऊंगा तो मैं कर सकूंगा सॉल्व अपनी प्रॉब्लम को. हो सकता है वो साइडवेज भी यूज करता तब भी उसका आंसर सॉल्व हो जाता. तो जो उसने इनफॉर्मली या रेंडमली सोचा, वो आपका कैंडिड सोल्यूशन था. ओके. It is not necessary that the candid solution is the actual solution of a problem. Now, this is an important point, that candid solution is not actually the actual solution of your problem. जरूरी नहीं है कि जो candid solution आपने follow किया, या जो candid solution आप सोच रहे हो कि अगर मैं wall के पार जाके अपनी problem solve कर लूंगा, तो आप उससे अपने problem के solution की तरफ जा सको. ऐसा जरूरी नहीं है. Candid solution एक informal way होता है आपके solution पे पहुंचने का. Maybe you will get the required result, or maybe you not get the required result. Okay, दोनों cases हो सकते हैं. Now there is an activity number 1.2. Your task is to find average height of your class fellows. Give a candid answer and also the method to find the exact solution. अब वो कहते हैं कि आपने अपनी क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट बतानी है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है,
कि कितने हैं, 5 है, 5 1 है, 2 है, कितनी है. One method is to use a measuring tape, mark the height on the tape, and then read the exact measurement from the tape. After recording the height of every student, you can calculate the average height of all the students in your classroom. अब वो कहते हैं इसका first method तो ये है कि you may take a measuring tape, आप measuring tape ले लें और उससे आप you have to measure each and every the height of each and every student of your class. And when you will calculate the height of every student of your class, then you can calculate the average height. फिर आप क्या करोगे, उन सारों को प्लस करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज हाइट आ जाएगी कि आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है. वन सोल्यूशन तो उसने ये बता दिया, वन मेथड सॉरी उसने ये बता दिया कि इस तरह से आप निकाल सकते हो हाइट. Or you can even find out the candid height of your student through some object of known height, like a book. Let's say the height of your textbook is 8 centimeter. You can mark the height of the book on the wall. Using the book several times, you can make a scale with intervals of 8 centimeter. Then by standing next to the wall, you can get a candid solution to the student's height. अब वो कहते हैं एक तो आपने ये measuring tape हो गई, दूसरा ये हुआ कि आपने एक टेक्स्ट बुक ले ली and you know that the height of your textbook is 8 centimeter. So you will put the height of your different. Yes, Fatma, please wait. So you can measure the height of your you can measure the height of your student, height of each and every student by putting the textbook in several intervals. पूरा आपने 8 सेंटीमीटर का एक स्केल बना लेना है, उसके बाद आपने जो हाइट है वो उस पे हर बच्चे को उधर ले जाकर आपने वो स्केल से मेजर कर देनी है हाइट. तो you may reach towards the candid solution. Okay. Okay, it's okay. Okay, fine. Next, page number 6. Fifth step of problem solving. Selecting the best solution. Sometimes we find more than one solutions of a problem and select the best one amongst them. They are saying that you are at the fifth step of problem solving. अब जब तक आप fifth step पर आ गए, you may find out multiple ways to find your solution. So they are saying that we may find more than one solution of a problem and select the best one. Different आपने solutions निकाल लिए अपनी problem के, and now you have to choose the best solution among all the solutions. Okay. For example, assume that names of all the students in your school are available on our website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. Now they have given a few example of your school. Yes, an example of your students of your school, that they are saying that all the names, all the students enrolled in your school name, the names are all mentioned on the website, and you are asked to search for a particular name. आपको कहा गया किसी एक, for example आपको name कहा गया कि अली का name आपने search out करना है, और जो जितने भी names हैं students के वो आपके school की website पर लगे हुए हैं. ओके अब आपने उस पूरी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल आपके वहां पर 500 बच्चे एनरोल्ड हैं, 500 स्टूडेंट्स आपके एनरोल्ड हैं, और वहां पर से आपने एक अली का नाम फाइंड आउट करना है. तो व्हाट विल बी द मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट द मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. They have given 4 solutions of this problem. Number 1, look at each name on the website one by one until the name is found or the list is over. अब वो कहते हैं कि अगर आपने इस तरह के आपने name find out करना है, तो you have to look at each and every name on the website one by one until the name is found or the list is over. अब जब तक list आपकी खत्म नहीं होती, जब तक आप 500 स्टूडेंट से go through नहीं हो जाते, या जब तक आपको name नहीं मिल जाता, अली का name जब तक आपको नहीं मिल जाता, आपने each and every student से के पास के list में से नाम उसका ढूंढना है. सेकेंड इज टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम. अब सेकेंड सोल्यूशन ये है कि आपने प्रिंट आउट लेना है और अपने जो स्टूडेंट का रिक्वायर्ड नेम आप सर्च करना चाहते थे उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, आपने लिस्ट का प्रिंट आउट ले लिया. Third solution is copy names, put them in Excel sheet and sort there in alphabetical order. Searching in a sorted list is comparatively easy. अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपने जो लिस्ट का है उसमें जितने भी बच्चे आपके एनरोल हैं उन सारे बच्चों के आपने जो नेम है ना वो एक्सेल शीट कॉपी कर लेने हैं, और आपने एक्सेल शीट में उन बच्चों के नाम डाल देने हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपने उन बच्चों के नाम डाल देने हैं, और जो आपने लिस्ट बनानी है उसको आपने सॉर्ट कर देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABC के ऑर्डर में आपने सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट कर देनी है. सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज कंपैरेटिवली इजी. अब वो कहते हैं कि जब आपकी लिस्ट सॉर्ट हुई हुई होगी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई है, ए वाले लेटर्स के जितने भी
नाम है वो पहले आ रहे हैं, फिर B से आ रहे हैं, C से आ रहे हैं, D से आ रहे हैं, तो that would be comparatively easy as compared that you will look at each and every name on the website of the students, or you can take print out and search the required name. Okay, so I think third solution is a bit better solution than 1 and 2 solution. Okay, fourth solution, just press Ctrl plus F when the list is available in a web browser. You can type the name to search automatically. Now they are saying that one of the most easy method to find the name of the student that you want is you have to press Ctrl plus F when the list is available in web browser. जब आप इंटरनेट पर सर्च आउट कर रहे हो, तो अगर आपने उस पेज से कुछ चीज सर्च आउट करनी होती है, so you may press Ctrl plus F. Ctrl plus F is used to find out the required name. वो आपसे पूछ लेगा क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है, आप उसे टाइप करके बताओगे मैंने ये वर्ड फाइंड करना है या ये चीज फाइंड करनी है, तो वो आपको वो चीज प्रोवाइड कर देता है. सो दे आर सेइंग यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली. तो आप वहां पर अपना नेम लिख दोगे जो भी आपने फाइंड आउट करना है, एंड यू कैन सर्च इट ऑटोमेटिकली. Okay, now you can see over here that there were multiple solutions to a given problem. Now you have to, it's all up depends upon you that which solution you want to choose and which one is the best solution. Now in these four solutions, number fourth solution is one of the best solution. Okay, it is saving the time, it is saving your effort as well. Okay, there can be other solutions as well. Now we can identify a solution that has less number of steps or that seems more effective based on some criteria. Okay, fine. Now they are saying that there may be multiple solutions of a given problem. यहाँ पर उसने 4 solutions बताए, इसके अलावा भी वो कहते हैं solutions हो सकते हैं. And you need to identify such solution that is based on less number of steps, जिसके अंदर बड़े थोड़े से आप काम करो और आपको required solution मिल जाए. तो वो कहते हैं उस solution को you have to opt the right solution, or that solution will be the best solution among different solutions. So there were 5 steps of problem solving. We studied them. First one was yes, problem solving step. There was the first solution, that was defining a problem. मैं एक दफा इसे quick review कर रही हूँ पूरे 5 steps का. फर्स्ट सोल्यूशन वाज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में बेसिकली ये था कि आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था कि उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, एंड योर गोल शुड बी क्वाइट क्लियर. एंड फॉर दिस पर्पस यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट स्ट्रेटजीज. You have to gain the background knowledge of all the you needs to take the background knowledge of all the solutions and circumstances, all the situations and all of your problems. Now the second step of problem solving was to understand a problem. So basically you have to understand the problem before jumping into the solution of the problem. Okay, that was the second step we have studied before. Third step is planning a solution. Now you have to analyze the problem. You have to divide your problem into different sub problems so that you can move towards the best solution of the problem. Next is fourth solution, that is defining candid solution. अब वो कहते हैं fourth solution that we have studied right now, that was defining a candid solution. Candid solution की तरफ आपने जाना है means to say that you have to choose any unplanned or any informal solution. Okay, and the fifth step of problem solving was selecting the best solution. Now you have reached towards different solutions. You have find out multiple solutions of a given problem, and you can select the best solution by following the different methods of a problem solving technique. Okay, this was all about the steps of problem solving. Next, there is a new topic that is of flow charts. Topic number 1.2, and it is on page number 6. Okay. Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve a problem. In the following, we discuss the concepts of flowcharts in detail. Now, they are saying that actually flowchart helps you to study about the different steps to solve a problem. Now you have to categorize your solution into a फॉर्मल वे ऑफ पेपर. मतलब आप एक पेपर पे अपने सोल्यूशन को डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लोगे. एक्चुअली फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल, और यू मे से इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम. ओके,
Moving towards the definition of flowchart, topic number 1.2.1. A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. We use symbols for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. Now basically they have given a small definition of flowchart over here, that it is actually a graphical representation. आपने अपनी डायग्राम की, आपने अपनी प्रॉब्लम के स्टेप्स की जो कि आप सॉल्व कर रहे हो, जिस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, you have to create a graphical presentation of all of that steps. We use symbols for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. Now you can see the sample flowchart of figure 1.6 over here, that you have to follow different symbols. आप different symbols को join करोगे different arrows के साथ. Arrows आप use करोगे और हर symbol को आप arrow के साथ join करोगे. That would be helpful in drawing the your flowchart, and it is one of the best tasks, so that you may know that which step you are going to follow first, second, third. These all are the graphical presentations, and it is very quite easy and efficient method of solving a problem. Figure 1.6 shows a flowchart for the simple problem of wearing wearing shoes with socks. It shows that not only the steps are important, but also the order to complete a process. Now 1.6 figure, you can see over here that they have given a simple example to solve to with that you wants to wear a shoes with socks. आपने shoes पहनने socks के साथ. Now this is your problem, and you have to move towards the required solution of the problem. Now first of all, in the first step, you can see over here in pink there is start. So actually your problem is starting from here, and your solution is starting from here. First step आपका कौन सा हो गया? Start का. Next solution, that is take shoes and socks. आपने अपने shoes और socks लेने हैं. Next step, wear socks. सबसे पहले आपने socks को wear करना है. Next is wear shoes, and the last one will be stop. अब आपने shoes भी पहन लिए हैं and socks भी पहन लिए हैं, so your flow chart is completed. So there would be different daily life examples that would be helpful in solving the in learning the concept of flow chart. Okay. Next is a flowchart is used to visually communicate the steps in a process. Now flowchart is a way to visually communicate. Visually आप देख सकते होगे, आप एक diagram create कर लेते हो जिसके through you may reach towards the best solution of a flowchart. Next is page number 7. Importance of flowchart in problem solving. In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. Now, why the flowcharts are very important in solving different problems or in your problem solving method, that by using a flowchart you can easily plan your solution. One of the biggest advantages is that you can easily plan your solution. You know that what would be the first step, what would be the second step, and you have to draw that all steps in a pictorial diagram. एक picture की form में आप अपने flowchart को create कर लेते हो, and that is one of the easy and efficient way to solve your problem. Okay, a graphical representation is quite effective way that rather than you are just listening to someone. And I have also given the quotation before this lecture that picture speaks louder than words. पिक्चर्स जो होती हैं वो लफ्जों से ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होती है. जब आपको एक पिक्चर नजर आ रही होती है तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव दैट इन लर्निंग प्रोसेस रादर देन योर सिंपल टेक्स्ट. आप अगर सिंपल एक टेक्स्ट पढ़ते जाओगे उससे आपकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी डायग्राम्स को देखकर, जितनी पिक्चर्स को देखकर, जितनी फ्लो चार्ट्स को देखकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. ओके. टॉपिक नंबर 1.2.3, determining requirements for a flow chart. Now what would be the basic requirements for drawing a flow chart, and what are the different symbols of flow chart? Now we will discuss all about these. In a flowchart, we use input, output, decision making, and processing. These concepts are described in the following. Input means taking data from a user, processing it, and gives some output as shown in the figure 1.2.
This is the figure 1.7. For a flowchart, the requirements are to known about. Now, in a flowchart, you need some input. You have to process that input. You have to apply the processing technique in the input, and you will get the answer, or you will get the output in return. Now, first step is inputs. Input means taking data from the user. It is important to know how many and what type of inputs are required. Now, if you wants to reach towards the solution of your problems, you have to identify that what are the inputs, how the user will takes the data, and what the data will look like. Now, it is very important to know that how many and what type of inputs are required. मतलब आपको किस तरह की input चाहिए, कितनी inputs आपको चाहिए, तो आप अपने required result की तरफ पहुंच सकोगे. So these all depends upon you and the data which you are taking for solving a particular problem. Next technique is processing. A flowchart also contains processing steps. The processing steps are used for performing calculations and storing the results of calculations. These may include increasing, decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values, etc. Now, in processing, basically you have to apply the process of calculations, and you have to store the results, and what are the values that all is from your that is the all the values you will take, that would be from your inputs. Input में से आप जितनी भी values आप दोगे, उन्हीं values के ऊपर आपने different calculations apply करनी है, और फिर जो उन calculations पे different methods apply करने हैं. That would be a method of adding. If you might to add two numbers, or you are multiplying, or you are dividing different numbers. So you whatsoever technique, whatsoever solution, or whatsoever thing you are using, you have to reach toward the solution by from the inputs that you have take before. Okay. Next is you can see a diagram over here, flow diagram, that is flow from input to output. Input पे आप दोगे उसे processing करोगे, then you will get the required result, that would be the output. That is basically the main task of your computer also, that it takes input, it processes the data, and it gives the result in the form of output. Next is decision making. To determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making. Now you have to determine that whether the statements or whether the inputs you are following, you are taking that inputs, that statements that are true or not. If आपने कोई inputs ले ली, now you are applying the process of decision making over here. आपने decision लेना है यहाँ से कि whether the result, यहाँ से जो कोई भी result आएगा, whether the result is correct or it is false. So all according to your requirement, or according to your understanding, or according to the requirement of your solution, you want to take the proper step, proper appropriate step for solving the solution, and this is called decision making. कि आपने किस तरह से decision लोगे. Okay. Next and the last step is outputs. Outputs are used to display information, and usually this information exhibits the processed results. Now what are the outputs? Generally यही होता है, यही आपकी definition normal computer के terms में हम कहते हैं. So in outputs you have to take all the results from your processing, all the results from your decision making comes to your output की तरफ आपके results आ जाते हैं, and outputs are the used to display information. और output आपको कोई information जो है वो display हो जाती है, आपको solution जो है वो display हो जाता है कि जो आपने inputs दिए हैं उससे क्या solution आपने generate करवाया है. Okay. We will study up till here today. In our next lecture, we will study about flow symbols of the flow chart, that how you can draw the symbols, and what are the symbols, but how you can draw the symbol of start, how you will end the diagram of your required solution, or how what is the symbol of decision making, what are the connectors, etc. Okay. Now